Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are all fine. And this is our next lecture, which is about the conditional sentences and wishes. You are already familiar with the word conditional. Conditional means if I do this, then this will happen. So there is a condition in this. And wishes, you are well aware of the wishes. I wish to become a doctor. I wish to become an engineer. So this is a little bit an easy lecture, and because we had already discussed it before in the tenses also, in the modal verbs also, in the question and auxiliaries also. So you need no panic to listen or to learn this lecture. So, by the word conditional sentences, it is totally based on the grammatical point of view. So, let's start it with the definition. Yes, what is the definition? The sentence used to a hope, supposition, regret might occur in the future or contrary to the right now. Yes, such type of sentences or the conditional sentences are the sentences used to hope. हमेशा कंडीशन से पता चला है, विषय से पता चला कि आपकी होप होती है, सपोजिशन होती है, कुछ आप सपोज करते हो, कुछ आप इंटरप्रिटेशन देते हो, सो कि इट माइट अकर इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में होगा, बट इट विल नॉट अकर इन द राइट नाउ, यानी कि आपके प्रेजेंट पोजीशन में नहीं होता, आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी सपोजिशन होती है कि दैट इट विल अकर इन द फ्यूचर. So, such type of sentences which are used as a hope, supposition, interpretations which are near to fulfill, so they might occur in the future, so they are included in the conditional sentences. Say that the fact is really different from the conditional sentences. Yes, what is the fact? Fact is a reality. जब हम कहते हैं ना कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है, तो हम कहते हैं ये तो फैक्ट है, ये तो होना है, यानी कि अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट पोजीशन पे होता है. But fact is not included in the conditional sentences. It is totally different from the conditional sentences. क्योंकि conditional sentences में हमारी hope होती है, we are supposed to be, हमारे पास कोई fact reality नहीं होती, but हम उसमें सिर्फ interpretation दे देते हैं. So the fact is totally different from the conditional sentences. Yes. So there are three types of, you can say that the conditional sentences are there, and we will discuss this the one by one. And what is the conditional sentence type 1? क्या होती है ये? It is possible and also very likely that the condition will be fulfilled. इसे कहते हैं कि ये भी आपकी पॉसिबिलिटी ही होती है, ये भी आपकी सपोजिशन ही होती है एक्चुअली, लेकिन इसमें क्या होता है, द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड. हमें खुद से होप होती है कि ये काम हो जाएगा, अगर हमारे पास ये चीज है तो इट विल फुलफिल. सो इसमें हमारे डाउट नहीं होता, इसमें फुलफिल होने के कंडीशन बहुत चांसेस होते हैं कि इट विल हैपन. ठीक है, कोई भी आप सपोजिशन करते हैं दैट इफ आई वर्क हार्ड देन I'll get the first position. So इसमें कंडीशन होती है कि अगर आप वाकई ये करोगे तो आपके पास हो जाएगी, यानी आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन इज फर्दर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स. यानी कंडीशनल सेंटेंसेस जो टाइप 1 है वो आगे थ्री टाइप के सेंटेंसेस में डिवाइड होती है. कि अगर सेंटेंस आ जाता है ऐसे कि इफ, हाँ, बिफोर डिस्कसिंग दिस स्ट्रक्चर मैं एक बात बताते चलूँ कि हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस में देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. वन इज द कंडीशनल एंड अदर इज द रिजल्टेंट पार्ट. यानी कि दो पार्ट होते हैं हमेशा कंडीशनल सेंटेंसेस में. एक पार्ट में आप बताते हो कि कंडीशन ये है, अगर आपने यूज किया, और दूसरे पार्ट में बताते हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन. ठीक है, सो देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस. अब मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस जो टाइप 1 है उसमें थ्री टाइप के आपके स्ट्रक्चर आ सकते हैं, और अगर ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर आपके पेपर में आते हैं, आपके क्विज में आता है, तो you notice that they are included in the conditional sentences type 1. Okay? इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ लगना है, इफ तो हर जगह लगेगा बिकॉज दे आर द कंडीशनल सेंटेंसेस. देन जो फर्स्ट पार्ट होगा इट इज टोटली इन द सिंपल प्रेजेंट, and
देन द सेकंड पार्ट विल बी इन द सिंपल फ्यूचर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर भी होता है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको आ जाता है तो आप फौरन से क्लिक करोगे ये तो टाइप 1 सिचुएशन में आ रहा है, टाइप 1 कंडीशन सिचुएशन। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल बताती हूँ। इफ आई have much money, I will buy a car. So अगर मेरे पास पैसे हुआ तो मैं I will buy a car, न्यू कार लूंगा। ठीक है, यानी डेफिनेट बात है कि अगर पैसा होगा तो ये कंडीशन कंडीशन मतलब हो सकती है, लेकिन फैक्ट क्या है, रियलिटी होती है आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास नहीं है तो आई कांट बाय अ न्यू कार। ये रियलिटी है, ठीक है, ये फैक्ट है। बट कंडीशनल सेंटेंसेस आर अवे फ्रॉम द रियलिटी, ये रियलिटी नहीं होते, ये आपकी सपोजिशन होती है। इफ आई हैव मच मनी तो आई विल बाय। ठीक है, ये तो था आपके कि अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर का सेंटेंस आता है तो आपको क्या होना चाहिए। दूसरे टाइप का सेंटेंस आ जाए तो वो भी फर्स्ट टाइप में इंक्लूड होता है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट हो इसके साथ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट में हो, सो इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। फॉर एग्जांपल, इफ माय फादर गिव मी मनी आई गो टू स्कूल। सो गिव एंड गो, so they are both the simple present tense, so such type of present tense is also included in the type 1 conditional sentence. And what is the fact? My father not give me money, so I don't go to school. We are the present position में कि अभी father ने नहीं दिए, so I don't go to school. But our concern is about the conditional for supposition. So this is the second type of structure. So what comes the third type of structure included in the type 1 situation? If along with the present, simple present and command. If you go to school, study hard. So this is go to school is your simple present tense and study hard is your command that you have to study hard. ठीक है, अगर इन तीनों टाइप के स्ट्रक्चर आपको पेपर में आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप 1 में इंक्लूड हो रही है। अगर ये तीनों टाइप यानी कि अगर आ जाते हैं इसके साथ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर आ जाता है तब भी आप कहोगे कि फर्स्ट टाइप में। अगर इसके साथ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट डबल आ जाता है तो तब भी आप कहोगे कि टाइप 1 सिचुएशन में इंक्लूड है। अगर इसके साथ सिंपल प्रेजेंट along with the command आ जाता है then it is also included in the first type. So what comes the next? This is the second type. The second type okay? It is possible but very unlikely that the condition will be fulfilled. ये सेम सिचुएशन होती है कि ये भी आपकी पॉसिबिलिटी ही होती है लेकिन इसमें आपके कंडीशन के फुलफिल होने के चांसेस कम होते हैं। जिस तरह फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशन में आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि यू आर नियर टू फुलफिल योर कंडीशन, बट दिस इज अनलाइकली, इसमें इतने आपके नहीं होते चांसेस। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सो इट हैज ओनली वन स्ट्रक्चर, इफ along with the simple past and simple past future. That's how it is explained. If you visited me yesterday, visited is related to the simple past. I would give you money back. I would. So it is the past future. देखिए अगर फ्यूचर होता तो हम विल लगाते हैं, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड। सो आई वुड गिव यू मनी। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपको क्लिक होना चाहिए कि दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। ठीक है, फैक्ट क्या है? यू डोंट विजिट मी सो आई डोंट गिव यू मनी। सो ये तो फैक्ट रियलिटी है, इट इज अवे फ्रॉम द कंडीशनल सेंटेंस। सो द कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 this. Note, if you use nominal sentences, so you must use to be were for all the subject. Yes, अगर आप कोई भी nominal sentence यूज कर रहे हैं, nominal sentence में क्या होता है? जिसमें आपका noun यूज हो रहा होता है, यानी कि आपके दोनों sentences में noun आ रहा होता है। noun in the sense कह सकते हैं कि name of a person आ रहा होता है या किसी person को हम denote कर रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपके साथ जो आपका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपका वर्ब लगेगा फॉर द ऑल सब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ प्लूरल्स के साथ ही लगाएंगे, क्योंकि अगर
ज़्यादा है तो उनके साथ वर्ड लगेगा, लेकिन इसमें अगर सिंगल आई भी है तो उसके साथ भी वर्ड लगेगा. So it is all only related to the nominal sentences. So you must have to use word for all the subject. For example, if I were you, I would not let her go. अगर मैं तुम होती तो मैं जाने नहीं देता. Okay? यानी कि if I were, so I is a singular था लेकिन उसके साथ भी verb लगा. So this is a, you can say that the rare condition जो है कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें नॉमिनल सेंटेंसेस भी लगाना पड़ जाता है. ठीक है. मैंने जैसे बताया कि नॉमिनल सेंटेंसेस में आपका नाउन पर्सनल प्रोनाउंस भी दी गई है. जो फैक्ट क्या है, आई एम नॉट यू सो आई लेट इट गो. तो मैं तुम जैसा नहीं हूँ सो आई लेट इट गो. Yes, next come the conditional sentence type 3. So it is impossible that the condition be fulfilled because it refers to the past. Yes, it is totally impossible. यानी कि इसमें तो आपकी possibility नहीं, it is impossible कि आपकी condition fulfill हो because it is so all related to the past है related to the इसका कोई supposition future पे नहीं होती, कोई hope नहीं होती future. So it is impossible. So what is structure? If the past perfect and the past future perfect. So how this explain? If I had slept means so had slept is related to the past perfect and would is the past future and have an perfect dreamt. If I had slept, I would have dreamt about you. ठीक है. यानी कि इसके होता है कि इफ आई स्लेप्ट मैं सो, अगर मैं सो चुका होता स्लेप्ट तो होता then I would have dreamt about you. तो मैं सोया ही नहीं था then how I would dream about you. तो इसमें आपकी कंडीशन इम्पॉसिबल होती है बिल्कुल. ठीक है. और फिर क्या होता है आई डिडंट स्लीप, ये रियलिटी में सोया ही नहीं था सो आई डिडंट ड्रीम अबाउट यू. मैंने देखा. ठीक है. आपको रियलिटी भी साथ साथ बताई जा रही है और आपकी पोजीशन भी बताई जा रही है. Yes. In the previous slides, this is all about the conditional sentences. कि इस वाले sentences होते हैं तो आप कैसे कैसे use कर सकते हो. Conditions क्या होती है? First condition में three types होती है. Second condition में structure क्या होता है? Third condition में structure क्या होता है? So this is your if sentences पे कह सकते हो आप, conditional sentences पे कह सकते हो. Okay? What comes the wishes? तो हमारे lecture का second part है. This is the wishes. Yes, we are well aware of the word wishes. बचपन से पढ़ते थे. I wish to become a doctor. I wish to become an engineer. I wish to become a pilot. I wish to become a good man. Yes, then this. So, what about wishes? Let's start it. Yes, what is the definition? The sentence used to express a desire, wish, that is expected to happen but contrary to the right now. So what is the definition कि वो सेंटेंस है जिसमें आप अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते हो, आप अपनी विश, आप अपनी ख्वाहिश जिसे कहते हो वो एक्सप्रेस करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि काश ये हो जाए. यू आर एक्सपेक्टेड टू हैपन बट कंपेयरिंग टू द राइट नाउ, जो आपके असल में प्रेजेंट पोजीशन में ऐसा नहीं होता और आप विश करते हो कि ऐसा हो जाए. तो सच टाइप ऑफ सिचुएशंस आप रेफर टू द विशेस होती है जिसमें आप अपनी डिजायर्स, अपनी विशेस करते express करते हो कि that you are expected that something happen in this way. So wish is used when the speaker wants reality to be different, to exactly the opposite. Yes, wish क्या होती है कि जब एक स्पीकर होता है वो कहता है कि अगर ये रियलिटी है तो मैं ऑपोजिट चाहता हूँ. ठीक है. अगर आज बुरा हो रहा है तो आई वांट अ गुड वन प्लीज. सो विश हमेशा यूज करते हैं कि स्पीकर चाहता है कि जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन जो अच्छी नहीं है उसके पूरी ऑपोजिट हो जाए. ठीक है. सो रियलिटी से भी ये भी डिफरेंट होता है जिसका इफ सेंटेंस मैंने बताया कि फैक्ट से हम डिफरेंट होते हैं. हमारी जो सपोजिशन और होप होती है, ये हमारी डिजायर्स होती हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू हैपन दिस. सो दिस इज अ विश. नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ विश? विश टू प्रेजेंट. अगर विश प्रेजेंट होती है तो हम उसकी सेंटेंसेस कैसे होते हैं? विश, विश
plus simple past. ओके से करते हैं आई विश आई बिकम प्रेसिडेंट. यस ये मेरी विश है कि दैट आई बिकम अ प्रेसिडेंट. सिंपल पास्ट में क्या. ठीक है. बट क्या आई डोंट बिकम प्रेसिडेंट. ये सिंपल प्रेजेंट की बात है. तो होता है ये सिंपल प्रेजेंट में है लेकिन विश जो हमने करनी कि आई बिकम अ प्रेसिडेंट पास्ट में होता. ठीक है. ये सिंपल पास्ट में आ जाता है. सही है. सो दिस इज योर टाइप वन विश. यस. The wish to past. एक पहले थी wish to present and this wish to past. Wish plus past perfect. पहले वाले में आपका simple perfect था और simple past था. इसमें आपका past perfect है. So I wish I had become president. But simple past में अगर effect देखा जाए तो I did not become president. So ये simple past perfect में had के साथ आ सकते. This is you can say your type 2 situation. यस. इसमें हमारा नोट क्या है कि अगर नॉमिनल सेंटेंस आ जाते हैं. नॉमिनल मीन्स कोई भी पर्सन प्रोनाउन आ जाते हैं. शी इज दे आर नोन एज द नॉमिनल सेंटेंसेस. अगर ये सेंटेंसेस आ जाते हैं इन द पास्ट सो यू मस्ट यूज द वर्ड. सो इसमें वही है कि आपके पास कोई भी सिंगुलर हो प्लूरल हो आप ऑब्जर्विंग वर्ब हमेशा वर्ब लगाओगे. फॉर एग्जांपल आई विश शी वर हेल्दी. हालांकि ये जो शी है वो सिंगुलर है तो हमें वर्ब लगानी चाहिए. बट नॉमिनल सेंटेंसेस जहाँ पे हमारे पर्सन का नाम आ जाते हैं वहाँ पे आप एक क्लियर आपका जो रूल है कि आप इधर वर्ड लगाओगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट. और फैक्ट क्या है शी इज नॉट हेल्थी सो आई विश शी वर हेल्थी. What comes in. So this is all about the wishes and it is very easy. So this there is an exercise for you. Mention to the fact of the sentences के देखने के लिए आप एक्सरसाइजेस रखिए. आगे स्लाइड लेने के लिए अगर इसी में फोकस करके देखिए कि अगर मैं आपको कोई कंडीशनल सेंटेंसेस देती हूँ तो आप इसका फैक्ट बनाएंगे. फैक्ट क्या होता है जैसे मैंने हर सेंटेंसेस के साथ साथ बताया गया कि अगर एग्जाम्पल लिया तो उसका फैक्ट मिलेगा. एग्जाम्पल लिया तो रियलिटी है. ठीक है. अगर मैं आपको ऐसे दे देती हूँ पेपर में फिर मैं दे देती हूँ क्वेश्चन दे देती हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस के. So you have to mention the fact. तो wish क्या है और आपका fact क्या है. If I have mistakes, I will ask apologize to you. Okay? This is not a teacher will love her. If I had a good job, I would have married the case. So आपने तो बताना है कि fact क्या है. आपने लिखना है और wish क्या है. Okay? And number two में हमने क्या करना है mention to the conditional sentence. पहले मैं अपना fact mention करना है कंडीशन मेंशन करने के आपको फैक्ट दे दिया जाएंगे तो आपने इसकी कंडीशन बनानी है कि अगर फैक्ट है तो व्हाट इज द कंडीशन. like if fact अगर दिया we didn't finish our report so the teacher asked us to collect them. तो आपने इसकी कंडीशन बनानी if this will happen if this I don't think that will happen. So fact the classroom was prepared so the students were able to study. So this right. Fact number three, you did not come in my party last night, so I did not give you a bread. So in this exercise, we will mention the conditional sentences. Okay. Yes, please make three sentences of the wishes. One is a wish, another is a fact. So this is your third exercise. You can see that. First, write a wish, then also mention its fact. So it is the practice. So this is all about your this active conditions and this condition is very easy to practice concept and be very easy to understand this. And I thought it was fully these difficulties which that we already discussed here where the tenses के क्या है तो इस sentences कैसे use होते हैं hypothetical बता देंगे that what are the structure and how they are used and wishes बता देंगे what are the type of wishes effect क्या होता है wish actually क्या होती है and if the question is based on the wish then we will mention the fact and if the question is based on the fact then we will mention the wish. So this is a little bit easy and amazing lecture. Thank you.
all about here.